So the last week we all spoke about वैराग्य, dispassion. पिछले हफ्ते हम सब लोगों ने वैराग्य के बारे में बात की है ना। वैराग्य मतलब सब चीजों से दूर रहना, उलझते हुए भी उलझे हुए बिना ना रहना ना? Today we are going to start a series of Shat Sampatti, the third pillar. आज हम सब लोग तीसरी सीढ़ी पर पाव रखेंगे जिसकी नाम है शट संपत्ति. संपत्ति मीन्स वेल्थ. संपत्ति माने क्या? धन. संपत्ति मीन्स wealth. Do you think you can acquire wealth without any efforts? धन क्या बिना किसी एफर्ट के हम लोग ला सकते हैं अपने पास? नहीं ना. यू कैन नॉट गेट वेल्थ विदाउट एफर्ट्स. सो सेम वे संपत्ति जो है हम लोग उसको बिना मेहनत के हासिल नहीं कर सकते. सिमिलरली यू कांट गेट दीज 6 वेल्थ्स विदाउट पुटिंग योर एफर्ट्स. So Shat Sampatti is something which would come when you put in the efforts. ये सारी शट संपत्ति जो है उसमें थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा. We will have to put in some of our individual efforts. So are we all ready for it? क्या हम सब उसके लिए सन्नत हैं, तैयार हैं? हाँ, शट संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? Are we all ready to gain the 6 wealths? 6 types of wealth. Wonderful. Okay. पहला धन है क्षमा. The first wealth is Shama. Shama basically means your peace of mind. शम का मतलब क्या है? मन की शांति. अब हमारे जितने भी प्रयत्न हैं, all the efforts that you make, all the gymnastics that you do, going to the advanced course, doing Padmasasana, doing meditation, is all to get only that peace of mind. Yes or no? सारा जितना भी हम लोग मेहनत सर्कस करते हैं किसके लिए? भाई मन शांत हो जाए. कौशिक जी, मन ही शांत नहीं होता है, बाकी सब हो जाता है कि नहीं? हाँ? So this is a wealth which you need to cultivate. You need to earn it. You have to deserve it before you desire it. Am I clear to you? इस चीज को पाने के लिए पहले हम लोगों को मेहनत करनी होगी. क्षमा. And why is this important? To know the knowledge. Because with a hazy mind, you can't digest knowledge. अगर मन बिगड़ा हो तो ज्ञान सुनने की रुचि छोड़ो, ज्ञान क्या है वो भी नहीं चाहिए हमको. हाँ या ना? Do you understand? We don't even want to listen to knowledge if our mind is upset down. Isn't it? Yes or no? और क्षमा का सबसे पहला जरूरत कैसे पूरा होता है? विवेक और वैराग्य से. How do you attain Shama as a wealth? By practicing Viveka and Vairagya. The moment you know that this is not helpful for me, you will drop it and your mind is at peace. Yes or no? शम को कैसे प्राप्त करना है? जान लेना है कि भाई ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और छोड़ देना है. और मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने बोला हुआ है कि भक्त वही है जो पूर्ण रूप से स्वीकृति रखे. In the last videos also in the channel, we have already discussed a lot of times that a devotee is a one who never rejects any situation. 100%, a thorough devotee is one who accepts everything and rejects nothing. Shama, shamatvam, very important. है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? How many of you feel that it's important? How many of you feel Shama is important? See, imagine I'm going to speak about Ashtavakra Gita. I'm going to speak about a lot of knowledge. बहुत सारे ज्ञान की बातें कर रहा हूं और आपको उसके बारे, आपको वो सुनने का ही मन नहीं है, आपका मन का फोकस ही नहीं है, तो आप सुनोगे क्या?
हम लोग अपने गुरु से भी इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन का खेल है। गुरु के रास्ते पे जो हमको गाइड कर रहे हैं उनको भी छोड़ देते क्योंकि हमारा मन बुरा मान गया। अरे तुम्हारा मन तो बहुत सारी चीजों के लिए बुरा मानता है, तुम गुरु के रास्ते पे चलने वाले बंधुओं का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारी मूर्खता है। We leave our mentors, we leave our guides, we leave our spiritual companions because we are all taken just by our ego. Everybody you want to meet wants to be satisfied in the ego. A mentor, a true mentor is one who hits the ego. असली गुरु के रास्ते में चलने वाला बंदा वही है जो आपके अहंकार को चोट पहुंचाए और बोले कि तेरे को चोट लगे तो भी चलता है लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ हूं। And how much will you bother for your ego just because that you want to say that I want to be comfortable in my ego cycle? I will be comfortable in my ego. You continue to be comfortable only in your ego. Then when will you grow? Shama, the inner tranquility of the mind. मन की अंदरूनी शांति। बाहर से बुलबुले उठ सकते हैं। You can be terrified in the morning when you get up because you didn't get a cup of coffee. That's fine. But internally, are you still happy and contented? क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो उठ रही भावना है उसको आप व्यक्त ना करो। It doesn't mean that you don't have to express your thoughts and your emotions to people. You definitely have the freedom to show it. But in the inner, are you still tranquil? It's like a mother showing anger but is not angry. If a mother really gets angry, then she is not a mother. माँ अगर वाकई में गुस्सा हो जाए तो बच्चे का कल्याण हो सकता है क्या? नहीं ना। माँ गुस्सा दिखा सकती है लेकिन गुस्सा हो नहीं सकती। वैसे ही गुरु आपको हर तरीके से आगे पुश करने की कोशिश करेगा और अगर आप उसको रेजिस्ट करते रहोगे तो आप ही नहीं आगे बढ़ पाओगे। बस you will not find your growth if you resist the guidance that is given from the guru's guidance, and that is what is needed for Shama. It's a very important quality. It's a very, very important quality. Each one of us must make efforts to get that. इसको पाने के लिए जितनी मेहनत करोगे उतना कम है। क्षमा करो। Even if you have to cry for it, Guruji, I am not finding my peace of mind. It is okay, cry. रोना है रो गुरु के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने भावनाओं को व्यक्त तो करो। पहले अपने मन को तीक्ष्ण बनाने के लिए शम बहुत जरूरी है क्योंकि बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है शम, और बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो ज्ञान अच्छी तरीके से पचता है। योर इंटेलेक्ट इफ इट बिकम्स शार्प, यू कैन डाइजेस्ट नॉलेज इजिली। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि कौशिक जी पहला जैसा रिश्ता नहीं रहा मेरा। आई एम ओके विद इट। There are many people who say, Kaushik ji, I don't feel the same connection with you and Gurudev. Perfectly okay. Whose growth is stopped is what you need to analyze. किसका growth रुक गया ये सोचो। That is lack of Shama. कोई एक रूल ब्रेक करता है, suppose if somebody breaks a rule and you get angry at it, what will you do with it? What can you do about those people who break the rules? कुछ कर सकते हो जो रूल्स ब्रेक करते हैं। आप गुस्सा हो सकते हो, यू कैन बिकम एंग्री। हु विल बिकम मिजरेबल? द पर्सन हु broke the rule will be having a wonderful fiesta somewhere else, at a pizza party or even having a dinner. What are you doing? आपका मन किधर है? आपका मन किधर है भाई? बहुत जरूरी है। कीप द माइंड काम एंड स्टडी। एट द मैक्सिमम यू कैन एजुकेट पीपल। आप लोगों को समझा सकते हो, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करो। मैक्सिमम यू कैन एजुकेट पीपल एंड देन यू इग्नोर देम।
That's all you can do. Give in your 100% and pray for them. But if you get agitated in your mind, if you get agitated in your thought process, then you have lost the game. How foolish can you be to disturb your peace of mind because of others' stupidity or others' ignorance? किसी दूसरे की गलती के लिए हम लोग अपने ऊपर तलवार क्यों मारे? What is the best thing that you can do? Educate people that look, smoking is bad. Even after that, if a person continues to smoke, you have educated him and then you ignore. But pray for him. Don't carry any kind of aversion in your mind. The moment we carry aversions in our mind, it becomes a part of your karma. कोई हमारी बात नहीं मानता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको सिखाओ, लेकिन मन में द्वेष मत रखो, मन में द्वेष मत रखो. मन में द्वेष रखने से तुम्हारा भला नहीं होगा. It will not help you at all. You creating aversions is creating a negative karma for you. Why do you want to have that? Isn't it? Yes or no? You went to somebody's house, somebody told you that I don't want to eat bitter gourd, but that gentleman fed you only bitter gourd. What will you do with it? You politely say, thank you, I am fasting today. Simple. That's it. कोई जबरदस्ती आपको करेला खिलाने वाला है तो बोल दो आपको, मेरे को क्षमा करें, आज मेरा उपवास है. But then your mind starts churning over it. How did she say about it? Why did he or she treat me with bitter gourd, which I did not like? That person doesn't even know whether you like bitter gourd or not. And look at your mind making assumptions. मजे तो मेरे को तब आते हैं जब लोग एस्ट्रोलॉजी सेशन में आते हैं और उसके बाद assumptions बनाने लग जाते हैं. Lot of people who come in the astrology sessions and just start making assumptions about their current situation. Wonderful assumptions. Where is Shama? Inner tranquility of mind. You might be in the worst of accidents, but can you still stay calm? अरे खुशी के समय तो बेवकूफ भी हंस सकता है. साधक तो वो होता है जब कठिनाई के समय अपने चेहरे पे मुस्कान रखे. In times of happiness, everybody can smile. Every nincompoop can smile. What big deal about it? But a real person of metal, a person with a lot of stability, is one who can still smile even if situations are going against him. Do you have that guts? Do you have that strength? Do you have that mental stability? That's what is important. क्या है हमारे अंदर वो ताकत है कि कुछ भी बिगड़ जाए, हम लोग नहीं अपना मन की शांति बिगाड़ेंगे. रिश्ते टूट गए तो क्या उसको नए सिरे से शुरू नहीं किया जा सकता? पुराने रिश्ते को पकड़ के वैसे के वैसे ही तोड़ते हुए जाना है तो जिंदगी चली जाएगी भाई. You hold on to all the past impressions of your relationship with others and you hold the same relationship with your guru and you say the guru has not given me attention, so I don't want to be with the guru. Whose loss is it? It's your loss. The guru will not lose anything. How foolish can you be by thinking that? Stability of mind. और उसके लिए सबसे सरल तरीका है सेवा. सेवा में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे और उनके साथ अगर आप टिक के रह पाए तो आप जीत जाओगे. To attain Shama, to gain it as a wealth, the best means is to do seva, because you will get service, because you will get all kind of cranky people in your seva. Some people will insult you, some people will praise you, some people will abuse you, some people will misuse you, some people will not understand you. But can you have a smile and say, I am there for you? Then you are a person of metal. तब आप कह सकते हो कि आप में क्षमा है.
सत्वा टॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लिख के भेजते हैं रिमार्क्स में। हर किसी चीज का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। अगर किसी में सही में श्रद्धा है सीखने की, तो मैं उस सत्वा टॉक के रिमार्क्स के लिए रिप्लाई करता हूं। There are a lot of people who leave a lot of comments, which is needed, which is not needed in certain channels. Why do you need to spoil your space of mind? Remember, this is your house. This whole body is your house, and this is the first floor. Don't rent it out to unnecessary people who don't even pay rent. Yes or no? Unnecessary people. वो उनका रिश्ता भी नहीं है हमारे साथ, फालतू में रिश्ता बना लेते हैं। Oh, this person said this thing to me. He didn't even mean to say anything to you. Shama, intellect of mind, inner serenity of mind. Am I making sense? समझ में आ रहा है सबको? This will touch many people's ego. How can I not retaliate when somebody is insulting me? First of all, who is taking it as an insult? किसी ने आपको इंसल्ट दिया, चलो दिया ठीक है, आपने लिया क्यों भैया? आपके पास क्या अपमान की टोकरी कम थी जो एक और अपमान ले लिया आपने? Why take all these things? Shama. Hundreds of things keep happening. Focus. Make your mind listen to you, not you listening to your mind. अपने मन को अपनी बात सुनने पे विवश करो। ये नहीं कि हमारा मन कुछ कह रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। Do not be a slave of your mind. Oh, my mind loves to eat ice cream. You eat 8 ice creams and you land up in the hospital. Shama. Oh, I feel like talking very rudely to this person. You get 10 punches on your nose and your nose bloats up. Enjoy. Shama. 10 लोग 10 चीजें कहेंगे, गुरु के रास्ते पे मत जाओ, इनकी बात मत सुनो, ये बेकार है, इनसे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। रहो अज्ञान में। और कितना अपने अहंकार को पकड़ के बैठोगे भाई? How much will you hold on to your ego? क्या अनुपम? कब तक? And how long? And how long is my question? Isn't it, Shreyak? हाँ जी लक्ष्मी जी बताइए, सवाल आ रहा है। गुड, लक्ष्मी जी इज आस्किंग अ क्वेश्चन। कोई इंसल्ट करे तो ठीक, बहुत ज्यादा उसको अपने अंदर ले, बट उसका अपन को आपका आप म्यूट पे चले गए लक्ष्मी जी, फिर से बताइए। आई विल ट्रांसलेट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। आप फिर से म्यूट पे चले गए। हेलो, हाँ बताइए। बेटा आवाज आ रही? नहीं, आप लिख के बता दीजिए, इजी हो जाएगा। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तब तक मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ। Sometimes when you do retaliate for something, it backfires on you. My first question, why do you have to retaliate? What is the need for you to retaliate when it is an ego? There is something in you which wants to retaliate, which means it is ego, right? Yes or no? Any retaliation is because of the ego.
And you would think that why did you retaliate? Just for what? Ego. Absolutely. Absolutely. Why do you want to retaliate considering it as an ego? क्षमा. अच्छा, ये ईगो को प्रूव करने के चक्कर में हमारे मन की शांति चली जाती है, ये आपने देखा है. Just to prove your ego that you are right, you lose your state of mind. Your peace of mind is lost. And what will you get by that? What on earth will you get by that? Nothing. Nothing. Absolute zero. It's better to lose in ego rather than winning in ego, because then you have lost your ego. And if you win in love, it is something much better. I say that every battle that you have for ego, lose it. It is okay. I am okay. You will grow somewhere. अगर अहंकार का कहीं कुछ भी आपके साथ, कहीं आपका अहंकार टिका हुआ है, भिड़ा हुआ है, तो उसके साथ छोड़ दो भैया. ऐसे तो हम इमोशनलनेस नहीं हुए. एक सेकंड, नाइस क्वेश्चन है, 1 मिनट. भैया ऐसे तो हम इमोशनलनेस नहीं हुए. नथिंग हर्ट्स अस, हर्टिंग अस टोटली. मैंने ये नहीं कहा कि इमोशंस मत दिखाओ, मैंने कहा अपने ईगो पे मत लो. इमोशंस दिखाना है, यू हैव टू शो योर इमोशंस. शो योर इमोशंस. शो एंगर, शो सैडनेस, बट डोंट अलाउ इट टू गो टिल योर ईगो. गुस्सा दिखाना है, दिखाओ. क्रोध दिखाना है, दिखाओ. लेकिन उसको अहंकार तक ना जाने दो. बहुत गहरा ज्ञान है ये, बहुत गहरा ज्ञान है. इट्स वेरी वेरी डीप. इट्स वेरी, those people who are still stuck in the body consciousness cannot understand this knowledge. I'm telling you very clearly, because it needs little bit of stability. You need little bit of state of mind to understand this knowledge. If you are stuck too much with your body, you will not be able to learn this knowledge. ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल अपने आप को शरीर समझ के बैठते हैं. अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम. अवजानन्ति माम मूढ़ा. Bhagavad Gita, the Lord himself is declaring there, fools are those who consider me as a body. मूर्ख है वो लोग जो समझते हैं कि मैं शरीर हूं. अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम. धन्यवाद लक्ष्मी जी. And how much will you take it to your ego? And just one word taking it to your ego disturbs your peace of mind. It just comes and shakes you off. But there are times when you have to retaliate, because when you don't, the opposite person will think that we are easy person to manipulate. There is a difference between both ego and self-respect. Don't mistake that. When you respect yourself, nobody can take away your respect. And you should know how to put your things in the right way. For that, you need to have effective communication. कोई अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको, then how to deal with egoist person which we come across in our life? There is not one egoist person, Anupama ji. Every person whom you meet is egoistic. Every person whom you meet is egoistic in this world. Even a college going student can be egoistic, and he can say that I don't feel connection with my Gurudev. How can you be so stupid enough to think it? A college going kid can say that. Imagine the pain that the teacher must be having for that statement. I don't feel connected to my teacher. The teacher will have hundreds of students. The teacher can focus on hundreds of students. Who is the loser? The student is the loser. If you hold on to your ego, you are the loser. And all those people whom you claim that they are egoistic, they are suffering from their own problems. You ask all those people whom you meet, who you are saying, अनुपमा जी अभी आपने कहा कि ईगोइस्टिक लोग हैं. वो जो ईगोइस्टिक लोग हैं, उन लोगों का खुद का कितना प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सोचो. And a person who is suffering from ego deserves most compassion.
A person with ego will be easily shaken. And a person with ego will have the audacity and misbehavior to talk to the guru and tell him to shut up. You keep quiet, you don't interfere. That is ego when guru wants to work in your life. Gurudev, you don't know what I am going through. And what if people uses our self-respect as attitude and ego? Sabina ji, there is a lot of difference between self-respect and attitude. In attitude, you hurt others. In self-respect, you don't hurt others. Very simple difference. In attitude, you hurt other people, but in self-respect, you don't hurt other people. You just make your point and you move away. That's it. Abhimanyu ji is asking, what is ego in simple words? Something which makes you unnatural, where you want to prove yourself that you are something to this world. That is ego. जहां तुम दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ हूं, where you are nothing. And the moment, okay, there's one more question from Sil. What if someone triggers something in you? Why did you get triggered? That's my first question, Sil. What if someone triggered? Are you so weak that anybody can trigger you? What if someone triggers something, your ego is going in circles about the situation? How? See, the first thing is the person has already gone out of the statement, right? That person has made a statement and gone already. Am I right, Sil? Are you able to hear me? Right? So if that person has already made that statement and gone, why are you thinking about it now? Yeah. So that's very important. So forget about what that person has told. It's already gone and done, right? Rucha Kelkar says, I am not able to gather courage to speak up for myself, and also I keep overthinking about the situation. If you keep overthinking about your situation, your Buddha must be really weak. Get an astrology consultation done, Ruchaji. The moment you overthinking is a sign of Buddha being weak, Mercury being weak. भैया तो हम strong कैसे बने? Meditation is the only way that can make you strong. And make it a habit. No, can you all take a sankalpa today that whatever happens, I am not going to take it on my ego. जो भी हो जाए, I will not take it on my ego. All right, let's do a simple activity. Do you all have a pen and a paper with you? सबके पास है एक पेन या पेपर या कुछ तो है आप लोगों के पास? कुछ तो रहेगा, या फिर आपका मोबाइल भी रहेगा? वो सारे इंसिडेंट्स अभी अपने आप को अनम्यूट करो और अपने आप को वीडियो से निकाल दो, वीडियो ब्लैंक करो और वो सारे इंसिडेंट्स लिख डालो जिसमें ईगो ट्रिगर हुआ है. चलो, कम ऑन, राइट इट डाउन. टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन. क्विक, राइट डाउन ऑल दोज इवेंट्स विच. अच्छा, ये मत करो कि मेरे को नहीं बोला गया तो मैं नहीं करूंगा, सबको करना है. राहु की गड़बड़ लग रही है, सन वीक है और मूड केंद्र दशा दोष में है. रुचा जी, अगर आपको इतना एस्ट्रोलॉजी पता है तो बाकी आप भी रेमेडीज कर लो ना, जो आपको करना है करो, फिर रेमेडीज करो. चलो चलो, नाउ स्टार्ट राइटिंग ऑल दोस इवेंट्स वेयर योर ईगो वाज ट्रिगर्ड. कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग. टेक 2 minutes क्विक. What your friend said, what your neighbor said, what everybody said, whatever you feel like writing, just write it down.
Yeah. But what if you don't remember some of them? Now, does this classify you as an egoistic person? It is just not possible that you don't remember your insults. Don't act so naive, Rajlakshmi ji. You will remember all your insults. Write that down. All those embarrassing moments you cannot forget. Last one moment. परफेक्ट अनुपमा जी. अभी इसको पूरा प्रैक्टिकली उतारने के लिए तो ये सारा चक्कर चल रहा है अभी. All right, done. All those people who are done, please just show me by your emoticons, or you can just give me a thumbs up. जिन लोगों ने कर लिया है. All right, wonderful, good. Done, every one of you. Done. सबका हो गया. हाँ. Okay, wonderful. Now, is there a guarantee that this person who has insulted you or hurt you will not hurt you again? कोई ऐसी गारंटी है कि ये बंदा आपको फिर से हर्ट नहीं कर सकता? नो, राइट? Accept people as they are. Simple. Simple knowledge. Accept people as they are. सांप को दूध दोगे तो वो विष ही उगलेगा, है कि नहीं? अभी देखो सबके चेहरे खिल गए. आह, क्या बात बताई भैया ने. Is there any guarantee that this person will not insult you once again? Not at all possible. And there's a second point that I want to tell you very clearly, extremely important. That when there is no guarantee that this person will not repeat what he has done, that also means that you had that karmic balance from that person to receive. If this person doesn't give you that insult, there will be somebody else who will give you that insult. Simple as that. अगर वो अपमान आपको इस बंदे से नहीं मिलना बाकी है तो वो दूसरे बंदे से मिलके रहेगा. You realize that whatever you have got, you may get it once again. All right. I can see one doctor also. I'll tell you one simple example. Is there a possibility that you might get a cold or a cough and you take some tablets, but is there any guarantee that you will not get cold and cough once again? एक बार खांसी सर्दी आई है, इसका क्या मतलब है कि अगली बार नहीं आएगा? ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं है ना. तो लोग अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, इसका मतलब यह है कि वापस फिर से कर सकते हैं. क्या बड़ी बात है? What big deal in that? People can repeat their behaviors because people are stuck in their patterns of behavior. You should have the intelligence not to be shaken by it. Does that make sense now? अब समझ में आ रहा है क्षमा का मतलब क्या है? दूसरे लोग अपने बिहेवियर में अटके हुए हैं, हम तो साधना कर रहे हैं भाई. हम क्यों उनके बिहेवियर के पैटर्न से इन्फेक्ट हो जाएं? आप लोग साधना कर रहे हो ना? कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो दूसरों के बिहेवियर से क्या लेना देना? कोई कुछ बोल के चला गया बस. आगे बढ़ो. If you are doing your sadhana, move ahead. How does other people's pattern
effect or impact or whatever does it do? Why should it even bother you? During this session, when you are reflecting this, you are smiling. But when this happens with you, can you still have that courage to smile? That is Shama. इस सेशन के चलते वक्त तो जब आप ये सब रिफ्लेक्शन कर रहे हो, बड़े मुस्कान दे रहे हो कि भैया ने तो कितना आसानी से बोल दिया, लेकिन जब फिर से ये चीज आपके जिंदगी में आएगा, तब क्या आप उसको एक स्माइल के साथ ले सकते हो? हिम्मत है तो साधक हो. If you are a real sadhak, then nothing can shake the inner tranquility of your mind. That is what in Bhagavad Gita Lord Krishna has said. इसी चीज को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. सुखेषु अनुद्विग्मनाः दुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधा स्थितिर्धीमा निरीक्षते. Praise or insult, profit or loss, respected or insulted, a person who is a sadhak will remain equal-minded everywhere. है इतनी ताकत, है इतनी क्षमता? अगर नहीं है तो साधना करना छोड़ दो. साधना के नाम पे ढोंग कर रहे हो फिर. If you cannot compromise on your stability of mind, then you are just faking to do your sadhana, because sadhana has to make you strong internally. Come what may, my happiness is in my hands. My stability of mind is in my hands. एग्जाम अच्छा गया तो हे जय गुरुदेव जय गुरुदेव. एग्जाम बुरा गया तो गुरुजी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं. What nonsense is this? Some very happy situations come. Oh, Gurudev is helping me. Wonderful. Gurudev's grace I am feeling. And if some negativity touches you, Gurudev is angry with me. I don't know why, Dada, I feel that Gurudev is angry with me. Have you lost your mind to ask these kind of questions? And does it even bother to Gurudev whatever is happening to you? He is a sthita pragya. गुरुदेव को कुछ फर्क नहीं पड़ता. कुछ लोग तो यहां तक, गुरुजी मुझसे गुस्सा है क्या भैया? गुरुजी को और कोई काम धंधा नहीं है आपसे गुस्सा होने के लिए? नहीं. How can you be so immature to think that Gurudev will be angry or upset with you? He is a sthita pragya. You know the meaning of sthita pragya? भगवत गीता में बोला गया है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव. There's a line which Arjuna asks Lord Krishna. अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मेरे को बताइए कि स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब होता है. तब भगवान जवाब देते हैं कि जब कामनाओं का वेग या मन का वेग या मन की गुलामी इतनी ज्यादा बढ़ जाए और हम सब अपने अंगों को अंदर खींच लेते हैं, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, उसको स्थित प्रज्ञ बोलता है. लाइक व्हेन देयर आर वेव्स ऑफ इमोशंस व्हिच हिट यू, यू डोंट बिकम एन इमोशनल slave, but you withdraw your senses within and you stay relaxed and calm. That is a sthita pragya. Show anger, show sadness, show happiness. You cannot be grave in a happy birthday situation. Happy birthday to you. You can't do that. You have to smile. You have to give the genuineness of the happiness. But don't get attached to it. बहुत ज्यादा हो गया. हाँ भैया, बहुत ज्यादा हो गया. Is it too much to digest? Yes. But can you take a sankalpa for yourself? I am not going to lose my focus of mind for this 1 week. जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मैं अपने मन को स्थिर रखूंगा. For this 1 week, whatever happens, I might be put into complete disaster, but I will have my mind focused.
कितनी शांति हो गई। अपने मन को देखो थोड़ा, अपने मन की स्थिति को देखो अभी थोड़ा। जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड, how much silent it is becoming with this talk. Is it or is it not? Anybody experiencing it right now at this point of time? Yeah, your mind is settling down. आपका मन शांत होता जा रहा है। और कितना दूसरों की बातों के लिए अपनी गुलामी करते रहोगे? Till how long will you be a slave of emotions of your mind? Wake up, master your mind. That is Shama. And you have to work hard for this. It will not come easily. इतनी आसानी से नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे होते हैं ना, आपने देखा है, यू सीन चिल्ड्रन, आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग। द पेरेंट्स शुड आल्सो से, आई डोंट फील लाइक फीडिंग यू। वंडरफुल रेस्पॉन्स इट विल। An employee should say, I don't feel like working. The employer should say, I don't feel like giving you the salary. Both of them will lose their Shama, and both of them will have guns in their hands. Shama. Keep your eyes closed. आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। Keep your eyes closed and sit straight. Anityam asukam lokam imam prapya bhajasva mam. This was what was told by Lord Krishna. भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही कहा है, ये दुनिया अनित्य है। मित्र ही शत्रु बनते हैं, शत्रु ही मित्र बनते हैं। Friends become enemies, enemies become friend in this transitory world. Realize this and don't be attached to anyone. इसको जानो और किसी के साथ भी आसक्त मत हो जाओ। दूसरों के व्यवहार ने हमको बहुत दुख पहुंचाया है, और उन सबको आज इसी क्षण आप क्षमा कर दो। Forgive all those people who have hurt you. Forgive your friends, forgive your relatives, forgive your spouse, all those people. उन सबको क्षमा दो जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, और विश्राम करते चले जाओ। Keep on relaxing. Do not resist any emotions. And thank all those people who have appreciated you. जिन जिन लोगों ने आपकी तारीफ की है उनको भी धन्यवाद दें। जिन जिन ने भी आपको रास्ते पे आगे बढ़ाया है उनको शुक्रगुजार दें। Express your gratitude to all those people mentally who have pushed you ahead on the path and have helped you to grow in your life. शांत होते चले जाएं। Keep on relaxing.
Allow all your emotions to come out for all those people who have hurt you and know that they can hurt you again. उन सब लोगों को स्मरण में लाओ जिन्होंने आपको दुख दिया है और जानो कि वो लोग फिर से आपको दुख दे सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना करो. Pray for them who have hurt you and who may hurt you again in future. मन को स्थिर रखें और संकल्प ले कि हम मन के गुलाम नहीं होंगे. Take an intention today that from now on you shall not be a slave of your mind. And you shall cultivate the wealth of Shama. और आप शम जैसे संपत्ति को अपने में बढ़ाएंगे. इसके लिए प्रतिबद्ध हो जाएं. Take a commitment today that whatever happens, I shall not allow the inner tranquility of my mind to be disturbed. You will educate everyone who will make a mistake, but you will not carry any aversions for them. जो भी गलती करेंगे आप उनको समझाएंगे, लेकिन मन में द्वेष नहीं रखेंगे. आंखें बंद ही रखें. Keep your eyes closed. ओम शांति शांति शांति. Take a deep breath in. एक लंबी गहरी सांस अंदर लें. धीरे से अपनी सारी भावनाओं के साथ अपनी श्वास को छोड़ें. Breathe out all your negativity and emotions with it. Take one more deep breath in. एक और लंबी गहरी सांस अंदर. शरीर के अंदर जो भी जकड़ और पकड़ है उसको सांस छोड़ते छोड़ते विदीर्ण कर दीजिए. All the stiffness that you're feeling in your body, breathe it out. Become aware of it. Breathe it out. दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो
स्वस्त्यैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ओम शांति शांति शांति। Take a deep breath in and breathing out with gratitude. At your own pace, you may open your eyes. कृतज्ञता के भाव से धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। Good. How many of you are feeling nice? Empty now. कितने लोगों को खाली लग रहा है? थोड़ा बहुत मन हल्का लग रहा है? तो भाई ये जान लो कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन हम अपने मन की शांति नहीं बिगाड़ेंगे। Realize that people will always behave the way they want, but it is your intelligence not to lose your peace of mind. Shama in one line is being intelligent and not reacting to people's words. क्षमा का मतलब क्या है? सिंपल। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? गॉट इट? नाइस। डिड यू लाइक दिस सेशन? समझ में आया? देखो ये एक संपत्ति है, इसको अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। This is a kind of wealth. You need to work hard to get that wealth. It is not so easy to get this wealth. Let me be very honest with you. Shama is a wealth for which you need to put efforts. क्षमा एक ऐसी संपत्ति है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लोग आपके भावनाओं की चिथड़े उड़ा देंगे। People will blow your peace of mind, but still you should be composed enough to say, whatever happens, I'm not going to shake. हाँ, भर भर के सेवा करो, do lot of सेवा। इतना बढ़िया ज्ञान का सेशन होने के बाद मन में एक तृप्ति होती है। कितने लोगों को तृप्ति महसूस हो रही है? How many of you are feeling contented, feeling very light? No? Any knowledge session which makes you light has touched you. जो भी ज्ञान का सत्र जो आपको हल्का बना दे, इसका मतलब है कि वो ज्ञान आपके चित्त में बस गया। काफी है आज के लिए। कुछ सवाल हैं? एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैज गॉट एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, यू कैन आस्क। अब मन हल्का हो गया तो भैया फिर क्यों सवाल डाल रहे हो? देखने के लिए कि मन कितना अटकता है। Why am I asking questions even after I told you to leave it? I want to check how much your mind is getting disturbed. भैया उसने ये कहा, भैया उसने वो कहा। Leave it. उसने वो कहा क्योंकि आपको मिलना था वो, बस। He told you that because you wanted to receive it. That's all.
जय गुरुदेव। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रियतां पुण्डरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वरो हरिः अस्मिन् तुष्टे जगत्तिष्ठं प्रीडिते प्रीडितं जगत् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। नेक्स्ट वीक द सेकंड संपत्ति दमा। ठीक है, अभी इस हफ्ते के लिए क्षमा प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस द वेल्थ ऑफ क्षमा फॉर दिस वीक। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।